અમદાવાદમાં ભારત સરકારના માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાજ્યના ફૂડ એન્ડ સિવિલ સપ્લાય વિભાગના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર ચેતન ગાંધી તથા ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશનના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર સંજીબ બહેરા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે એલપીજીની કોઈ અછત નથી. વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ગ્રાહકોને એલપીજી સિલિન્ડર બુક કરવા માટે ડિજિટલ માધ્યમનો ઉપયોગ કરવો તેમજ બહારના રાજ્યમાંથી આવતા શ્રમિકો તેમનું શ્રમિક કાર્ડ તેમજ આધાર કાર્ડ બતાવીને 5 કિલોના સિલિન્ડર વિતરકો પાસેથી લઈ શકશે. गुजरात की सवाल है, वहाँ पे स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, डाई, केमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, वहाँ पे भी 20% दे रहे हैं. उसको छोड़ के इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, उनको भी 20% दे रहे हैं. ओवरऑल जो हमारा सेल प्रीवियस जो वार से पहले था उसको 70% अभी दे रहे हैं. इट्स अ गुड नंबर, 70% वेरी हाई नंबर. पैनिक बुकिंग के चक्कर में काफ़ी 4 टाइम्स 5 टाइम्स बुकिंग हुई है, तो हम लोग उसको भी सप्लाई करें. सो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अभी है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को 100% इंश्योर करें. गुजरात स्टेट में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करीब 68 लाख का डिमांड होता था पर मंथ, 68 लाख नंबर ऑफ सिलेंडर्स, और लास्ट मंथ भी हम लोग 68 लाख सिलेंडर सप्लाई किए हैं. उसमें कोई भी कटौती नहीं हुई. डोमेस्टिक सप्लाई में किसी भी तरह कटौती नहीं हुई. जो डिमांड है मार्केट में उसको 100% पूरा कर रहे हैं.